Hi guys, this is Sneha. Welcome back to my channel SnehaTutorialz. I hope you all are safe and doing great. So in today's video, I am gonna show you how to do long lasting makeup for oily skin. So if you're interested to know how I do this flawless makeup look, then please video को end तक ज़रूर देखना. So let's start the video. सबसे पहले शुरू करूँगी टोनर से यूजिंग गुड वाइब्स रोज ग्लो टोनर. टोनर ऑप्शनल स्टेप है, चाहो तो यूज़ कर सकते हो वरना स्किप कर सकते हो. देन यूज़ करूँगी मॉइस्चराइज़र. मैं यूज़ कर रही हूँ मामाअर्थ ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र. आप कोई भी जेल बेस्ड या फिर ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो. ऑयली स्किन है फिर भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करनी चाहिए. मॉइस्चराइज़र को कभी स्किप मत करना. उसके बाद यूज़ करूँगी कलर बार परफेक्ट मैच प्राइमर. ये प्राइमर सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, बहुत ही अच्छा प्राइमर है ऑयली स्किन के लिए. उसके बाद है एक ट्रिक, थोड़ी सी लूज पाउडर को लेकर पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी. दिस विल बी हेल्प मेकअप लास्ट लॉन्गर. ऑल्सो जो ऑयलीनेस है उसे भी काफ़ी हद तक कम कर देगी. ये वाली स्टेप ज़रूर फॉलो करना. देन यूज़ करूँगी ऑरेंज कंसीलर फॉर डार्क सर्कल्स. And for foundation, I highly recommend Maybelline Super Stay Foundation. This is the best foundation for oily to combination skin. ये फाउंडेशन मैट एंड फुल कवरेज है. अगर आपकी ऑयली स्किन है एंड फाउंडेशन स्टे नहीं करता देन ये वाला फाउंडेशन आप ज़रूर ट्राई करना. फिर यूज़ करूँगी Maybelline एज रिवाइंड कंसीलर. मुझे ये कंसीलर थोड़ी सी ड्राई लगती है, सो ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है. ये भी हाईली रिकमेंड करूँगी. देन सेम लूज पाउडर से पूरे फेस को सेट कर लूँगी. ओके, पाउडर यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर ट्रांसलूसेंट पाउडर. ये मैं सजेस्ट करूँगी ऑयली स्किन पर कॉम्पैक्ट पाउडर की जगह लूज पाउडर यूज़ करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी होती है. फिर ब्राउन्जर यूज़ करूँगी माइग्लाम पोज HD ब्राउन्जर. इसमें ब्राउन्जर की 2 शेड्स है. 2 शेड्स को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हो और अलग अलग भी यूज़ कर सकते हो. ब्लशर के लिए यूज़ करूँगी माइग्लाम के प्ले पीच ब्लश. ये एक पीच ब्लश है, बहुत ही सुंदर लगती है फेस पर एंड बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड. ओके, नाउ दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट स्टेप. टेक द लूज पाउडर एंड बेक योर फेस. ये स्टेप हेल्प करेगा मेकअप को लॉन्ग टाइम तक स्टे कराने में एंड मेकअप को फेड होने से रोकेगा. 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे सेट होने के लिए. देन एक्सेस प्रोडक्ट को डस्ट ऑफ कर लेंगे. देन मेकअप सेटिंग स्प्रे को यूज़ करूँगी एंड पूरे बेस मेकअप को सेट कर दूँगी. आई एम यूजिंग मिस क्लेयर ड्यूई मेकअप सेटिंग स्प्रे. ये ड्यूई मेकअप सेटिंग स्प्रे है. आप चाहो तो कोई भी मैट मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो. एंड उसके बाद मैं अपनी आई मेकअप को कंप्लीट करके आती हूँ. ओके, दिस इज़ माई आई मेकअप. नेक्स्ट हाइलाइटर यूज़ करूँगी शुगर डी फोर्स मिनी हाइलाइटर.
फिर से फुल मेकअप को सेट कर लूँगी सेम मेकअप सेटिंग स्प्रे से। लास्टली लिपस्टिक के लिए यूज़ करूँगी वेट एंड वाइट लिक्विड लिपस्टिक एंड डन द फुल मेकअप। So I hope you really find this video helpful. If you like this video then like it, share it with your friends. Also don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for my future videos. All products link in description box. So that's my today's video. I will see you in my next video. Till then take care and bye.